Hello students, good morning and welcome to my new video. देखो students, previous class से पढ़ाई थिला एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर. ओके स्टूडेंट्स, जो माने वीडियो देखि नांती वीडियो देखि देबे. सो आज हम पढ़िबा गोटे न्यू टॉपिक. ओके, न्यू टॉपिक रो ना हला दैट इज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर. वेरी वेरी इंपोर्टेंट. ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स. ओके स्टूडेंट्स, देखो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर. Okay, grouping of capacitor. Mone rakho students, there are two types of grouping of capacitor. Grouping of capacitor. Kona that is capacitors in parallel. Dekho students, number one, capacitors in parallel. Then number two, capacitors in series. Okay students, देखो number one capacitors in parallel, then number two capacitor in series. तो first हमें पढ़िबा capacitor in parallel. आज हमें देखिबा कोन capacitors in parallel. ओके, तो देखो तो हेडिंग दे दिया उथरे, that is capacitors. Okay, capacitors in parallel. Very very important. Okay, very very important long question. Capacitors in parallel. तो फर्स्ट हमें कोन करिबा डायग्राम ड्रा करिबा. कैपेसिटर इन पैरेलल तो डायग्राम ड्रा करो. समस्त डायग्राम ड्रा करो. दैट इज टर्मिनल ए नियो. ए इज द टर्मिनल, देन सो बी इज द टर्मिनल. बैटरी कनेक्शन दियो. सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. इट वी हैला पोटेंशियल डिफरेंस. पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल. देखो स्टूडेंट्स, एठी हमें कोन कैपेसिटर का हमें पैरेलल कनेक्शन करिबा. देखो सब दिस इज ए कैपेसिटर, अनदर कैपेसिटर. सपोज हम एनटा नहीं जीवा. ओके, एनटा कैपेसिटर कनेक्शन करो. दैट इज ए टर्म ए पॉजिटिव माने पी प्लेट. सपोज क्यू प्लेट. देखो सब मन रखो. ए सब कैपेसिटर फर्स्ट प्लेट ला पी, सेकंड प्लेट हला सपोज क्यू. पी प्लेट सब पॉजिटिव पॉजिटिव नियो. ओके, क्यू टा नेगेटिव, चलो पी टा पॉजिटिव, क्यू टा नेगेटिव, चलो पी टा पॉजिटिव, क्यू टा नेगेटिव. देखो स्टूडेंट्स, एटा जॉइन करो. से बोला बी टर्मिनल. ओके, एटा एन को भी जॉइन कर दिया. तो मार दे दिया स्टूडेंट्स. ओके, एटे क्यू चार्ज फ्लो हेबा. देखो अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू. एटे क्यू रिटर्न चार्ज रिटर्न करिबो मान सर्किट रे फ्लो है कि पुनी रिटर्न करिबो क्यू चार्ज. एठी फर्स्ट चार्ज हेबा. देखो एटे Q1 चार्ज, सेकंड हेबा Q2. एठी Q2 चार्ज फ्लो हेबा. देखो Q2 फर्स्ट Q1 चार्ज गला, देन Q2. एठी हेबा Qn चार्ज. एटा n. एटा फर्स्ट कैपेसिटर ना हला सपोज C1. C1 इज द फर्स्ट कैपेसिटर, देन C2 इज द सेकंड कैपेसिटर डॉट Cn. Cn इज द n नंबर ऑफ कैपेसिटर. ओके, डायग्राम टा हला n नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके स्टूडेंट्स, देखो इट इज फर्स्ट कैपेसिटर ना हला C1, देन C2, देन Cn. एटी क्यू कैपिटल क्यू चार्ज टा फ्लो हेबो, किंतु चार्ज टा डिफरेंट हो जेबो. देखो एटी Q1, एटी Q2, एटी Qn चार्ज हेबो. ओके स्टूडेंट्स, एटा ए टर्मिनल, दिस टर्मिनल ए, दिस टर्मिनल बी. जो डायग्राम देखि दियो स्टूडेंट्स. डायग्राम टा देखो. एटा फर्स्ट प्लेट टा P, सेकंड प्लेट हला Q. ओके, तो हम देखिबा एबे डेरिवेशन करिबा. केते बेले पैरेलल कनेक्शन कोआ जेबो. देखो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर केते बेले पैरेलल कोआ जेबो. जेते बेले देखो capacitors are, देखिए दिया स्टूडेंट्स, capacitors are said to be कहा जीवो, said to be connected in parallel. Okay students, देखो very simple. Capacitors are said to be connected in parallel if the first plate P को देखो फर्स्ट प्लेट P. If the first plate P is connected together मान सब कैपेसिटर ऑफ फर्स्ट प्लेट P जोटा हला. If the first plate P
ये क्यू चार्ज फ्लो होची देखो फर्स्ट प्लेट P is connected together at point A रे देखो at point A रे कनेक्शन है जेटा connected together at point A ओके स्टूडेंट्स माने कोन हला केते बेले कैपेसिटर को पैरेलल माने कैपेसिटर टा केते पैरेलल कहा जीवो जेते बेले सब कैपेसिटर फर्स्ट प्लेट टा ए पॉइंट रे कनेक्शन हबो ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट से बोलिया एंड द सेकंड प्लेट second plate Q निया जे second plate Q of all the capacitors are connected together at point B हेले कोन कह जीवो जदि कैपेसिटर इन पैरेलल देखो capacitors are said to be connected in parallel केते पैरेलल कह जीवो if the first plate P is connected together at point P if the first plate P is connected together at point A and the second plate Q of all the capacitor are connected together at point B okay students देखो जदि first plate of all the capacitor connected at point A then second plate of all the capacitor connected at point B रहले कोन that is called parallel connection clear students first plate P of all the capacitor कर देबा first plate P of all the capacitor is connected together okay students connected together at point A देखो स्टूडेंट आउटर देखि दियो capacitors are said to be connected in parallel if the first plate P of all the capacitor is connected together at point A and the second plate Q of all the capacitor are connected together at point B हेले कोन हबो this is called parallel connection clear student देखि दियो ओके नेक्स्ट हमें देखिबा नेक्स्ट हमें C1 रा कैपेसिटी के माने C1 रे चार्ज टा केते Q1 C2 रे चार्ज टा केते Q2 Cn रे चार्ज केते Qn से विषय लिखिबा हमें नेक्स्ट देखो if all the capacitors of capacity कोन C1 C2 डॉट Cn नहीं समय देखो if all the capacitors of capacity C1 C2 dot Cn draw with charges but draw charges कोन charges draw charges कोन Q1 Q2 dot Qn देखो स्टूडेंट्स if all the capacitors of capacity C1 C2 dot Cn draw charges Q1 Q2 dot Qn okay students हला एठी कोन हबा देखो पोटेंशियल डिफरेंस ता V सब जगह रे सेम हबा देखो ये सब जगह रे V ता सेम कोन पई हियर potential difference बा इलेक्ट्रिक potential difference V is same everywhere कोन पई देखो here potential difference V is same everywhere because all the capacitors are connected at common points A and B देखो very important देखो जेहेतु A और B रे से माने कनेक्शन होइछंती कॉमन पॉइंट रे दिले कोन सब जगह रे potential difference ता V हबो देखो सब जगह रे ओके here potential difference V is same everywhere because all the capacitors are connected at common points A and B okay students next suppose if Q is the capital Q if Q is the total charge within the combination total charge नहीं if Q is equal to total charge with this combination हेले कोन हबो देखो इट कैपिटल Q रो फार्मूला कोन हबो कैपिटल Q रो फार्मूला हबो देखो स्टूडेंट्स that is capital Q is equal to हबो
Q1 plus Q2 plus dot Qn. Okay students, give equation number 1 देइथो देखो कैपिटल Q माने टोटल चार्ज रो फार्मूला कोन आसला Q1 plus Q2 plus dot Qn. Okay students, next एठी अब देखो एठी V रो फार्मूला कोन हबो देखो एठी V is equal to V सब जगह समान तो V is equal to फार्मूला कोन हबो दैट इज Q1 by C1 से बडा कोन हबो Q2 by C2 से बडा डॉट डॉट कोन हबो Qn by Cn. देखो स्टूडेंट्स V is equal to कोन पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to कोन हबो Q1 by C1 Q2 by C2 डॉट Qn by Cn. ओके स्टूडेंट्स, देन एटी Q1 रो फार्मूला कोन हबो देखो Q1 रो फार्मूला C1 into V so Q2 रो फार्मूला कोन हबो C2 into V so Qn रो फार्मूला कोन हबो Cn into V. देखो स्टूडेंट्स सब को इक्वेशन 2 दे दियो Q1 रो फार्मूला हला C1 into V, Q2 रो फार्मूला हला कोन C2 into V, Qn रो फार्मूला हला कोन Qn रो फार्मूला हबो Cn into V. ओके स्टूडेंट्स देखि दियो नेक्स्ट ओके V is equal to Q1 by C1 Q2 by C2 Qn by Cn. Next, if C is the capacity of the combination suppose if C is the capacity of the combination hele formula कोन C रो formula कोन हबो देखो C is equal to formula हबो Q by V. देखो स्टूडेंट्स C रो formula कोन हला C is equal to Q by V, then capital Q is equal to formula कोन हबो capital Q रो formula हबो C into V. देखो very very important देखो C माने कोन C इज कैपेसिटी चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस C is equal to Q by V, then Q is equal to कोन हबो CV. इक्वेशन 3 दे दियो गिव इक्वेशन नंबर 3. एबे कोन करबा देखो इटी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 रा वैल्यू कोठी पुट करबा इक्वेशन 1 रे पुट कर दबा देखो इटी Q जगह रे वैल्यू पुट करबा Q रे वैल्यू के दे CV इक्वेशन 3 टा यूज करबो इटी Q1 जगह रे पुट करबो कोन C1 भी पुट करबो Q2 जगह रे C2 भी पुट करबो और Qn जगह रे Cn भी पुट करबो. ओके स्टूडेंट्स पुट करो लिखि दियो दैट इज using equation 2 and 3 in equation number 1. very simple put कर दियो put क्लब रे कोन मिलबा देखो using equation 2 and 3 in equation number 1 put क्लब रे कोन हला equation 1 टा कोन that is Q रो फार्मूला कोन 2 आउ using equation 2 and 3 in equation 1 Q रे 3 equation यूज कर Q जगह रे कोन CV is equal to Q1 रो फार्मूला केते Q1 रो फार्मूला हबो C1 into V so Q2 रो फार्मूला केते C2 into V the Q2 रो फार्मूला C2 into V plus dot Qn रो फार्मूला केते Cn into V. देखो स्टूडेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट यूज करा हला एबे देखो दैट इज CV एटा कॉमन केते V कॉमन आसीबो देखो दैट इज C1 plus C2 plus dot Cn. देखो स्टूडेंट्स V कॉमन से कोन हबो C1 plus C2 plus dot Cn V भी कैंसिल एटा CP कर दियो P माने पैरेलल CP इज इक्वल कोन हबो C1 plus C2 plus dot Cn. एटा होची इंपोर्टेंट फार्मूला देख इक्वेशन 4 कर दियो गिव इक्वेशन 4. एटा होची कोन कैपेसिटर्स इन पैरेलल रो फार्मूला CP इज इक्वल टू C1 plus C2 plus dot Cn. एटा n नंबर ऑफ कैपेसिटर अछि देखो n नंबर ऑफ कैपेसिटर ले कोन हबो फार्मूला CP is equal to C1 plus C2 plus dot Cn. तीनटा हेले कोन हबो C1 plus C2 plus तीनटा कैपेसिटर थिले कोन हबो फार्मूला CP is equal to C1 plus C2 plus C3. ओके स्टूडेंट्स एटा कोन हबो डेफिनेशन that is the total resultant capacity the total resultant capacity of the capacitor the total resultant capacity of the capacitor when capacitors connected in parallel कोन हबो is sum of the individual capacity. এটা হচ্ছে conclusion. দেখো স্টুডেন্ট this is the conclusion. The total resultant capacity of the capacitors when capacitors are
connected in parallel कौन है वो is sum of the individual capacity. Okay students, very important. Cp is equal to ना C1 plus C2 plus dot dot Cn. এটা হচ্ছে resultant capacity is equal to formula কোন না sum of individual capacity. Okay students, this is all about capacitors in parallel. Okay students, okay, যদি ভিডিও যদি ভাল লাগুଛି মানে কাইন্ডলি লাইক কর, শেয়ার কর এন্ড সবস্ক্রাইব কর ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ ଦବାଇ ଦିଅ। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ କାଇଣ୍ଡଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ବାଏ।